Right. Fine. That's great. Right. Can you guys see the Salesforce org? Yes, sir. Yes, sir. And new tabs, if I'm opening, those are also visible, right? Yes, sir. Yeah, fine. Yeah. I thought maybe I shared the tab by mistake. Right. Fine. The tabs are not visible. No, this Now it's setup you visible. can see. Yeah. Yes, yes, yes. Fine. Yeah. So then, so last time what we had done was we had basically made a flow which did some backend automation based on the field updates and whatever we want. Hello, sorry to interrupt you, sir. I'm not able to see your screen. Okay. Anyone else able to see? Not able to see? I am I unable. can't see. I can't see. Okay, I think could be maybe bandwidth issue. No worries. I'll try to share once more, just in case it's some issue on this side. Right, is it visible now, everyone? No, sir. Yes, sir. Visible, sir. No, sir. Not No, to sir. me, sir. So I thought it's a network issue, sir. But so we are some of the are visible to this. Okay, who all cannot see? Sir, me, Ravi. Me, I'm not Ankita. able to see, sir. Okay, let me do one thing. I am also. Okay. Minimize everything. I have code running. Okay, I have multiple windows for this running. This also. um, Let me share now. Let me know if this my screen is visible. Yes, visible. Yes, sir. You can see Chrome Still, setup. No, sir. Not visible, sir. Oh, sorry. I think this is sorry. Is Chrome now visible? Yes, sir. Visible, Yes, sir. sir. Yes. Fine. but I hope so, sir. Something is problem with me. I'm not Sir, no, able sir. to I'm see it. unable to. Okay, those who are not able to see, can you please disconnect and rejoin once more? I'll wait. Please, all of you, disconnect and rejoin once more. Yes, sir. Visible. Right, anyone else? Ravi, is it visible now? Right. Anyone else who is still not able to see? Fine. I'll take that as a yes.
Yes, everything is visible, sir. Right now, is everything is okay. So today what we'll be covering is something a bit more different. Say पिछली बार हमने जो भी automation किए थे सब कुछ किया था, all of this was happening on the back end. What if I want some functionality to be done on the front end? So let's take the opportunity object only since you are working with this one majorly. मैं चाहता हूं कि यहाँ पे I want a new screen to open instead of all of these details opening, right? यहाँ से जैसे बहुत सारी fields edit कर सकते हैं, right? What if I want कि based on the stage I should, what are the pick lists? Okay, this is a pick list value and right. Okay, let's take these two pick lists, right? What I want is that on click of this button, a user should just have to enter these two fields. Okay, like I'll maybe have some button, you know, update source. बेसिकली सिनेरियो ऐसा होता है कि समटाइम्स यू वांट मे बी कुछ यूआई पे ही कुछ फ्लो चाहिए, आपको कुछ यूआई में ही कुछ एलिमेंट चाहिए जहाँ पे यू वांट द यूजर टू बी एबल टू एक्सेस दैट, राइट? नॉट बैक एंड बट यूआई पे ऑटोमेटिकली चले, राइट? सो इन दैट केस व्हाट यू नीड, नॉर्मली पहले क्या होता था, पहले आपका रहेगा यू कैन क्रिएट ऑरा कंपोनेंट्स, राइट? एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट आपने बनाए एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ प्रीटी कॉम्प्लेक्स एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट जहाँ पे एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल सब कंपोनेंट्स रहेंगे, बेस्ड ऑन बटन क्लिक आप एक को विजिबल करोगे, दूसरे को हिडन कर दोगे, ऐसे कर करके यू कैन क्रिएट 2-3 कंपोनेंट्स ऑन द यूआई, दैट यू कैन स्टिल डू, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि एक कंपोनेंट का कोड अगर आपको लिखना है जस्ट फॉर चेंजिंग द कंपोनेंट आल्सो इट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स कोड जो आपको लिखना पड़ेगा. सो विद टाइम सेल्सफोर्स ने क्या किया, फ्लोस के अंदर दे क्रिएटेड अ न्यू सब टाइप ऑफ फ्लो which is called the screen flow. As with the name you can understand that screen flow means it is something which will run on the UI. Okay, like just if you go through the description you will be able to understand that guides the user through a business process that runs from lightning pages, experience cloud sites, quick actions and more. So what does that mean? Lightning pages पे यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, डायरेक्टली यहाँ से भी चल सकता है. आप यहाँ पे किसी बटन क्लिक पे चलाना चाहते हो देन भी चल सकता है, राइट? इवन फॉर द यूआई एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट्स अगर आप इन्वोक करना चाहते हो यू कैन, राइट? बट इट इज बेटर टू जस्ट रन अ नॉर्मल फ्लो फॉर दैट, बट स्क्रीन फ्लो इज specifically catered for that. So let's just create one screen flow and then we'll go step by step. So inside the screen flow, the main difference you will see here is the data related operations are same as the one we were getting for auto triggered. Same with logical operations, right? Actions आपका है, subflow आपका है. There is one new interaction that has gotten added here, which is called the screen. Now within this screen, as soon as you select that, you come up with the screen designer dialog box. इस dialog box के अंदर आप क्या कर सकते हो? Let's go here. Let me go back to opportunities and click on new. आप देखोगे ये एक UI screen element खुला मेरा, ओपन हुआ, राइट? ऑन द बटन क्लिक, जहां से मैं नया अपॉर्चुनिटी बना सकता हूँ. विथ स्क्रीन फ्लो व्हाट इट लेट्स यू डज इज आप सेम चीज एक कस्टम बना सकते हो एज पर योर नीड, राइट? विच यू कैन देन पुट ऑन द यूआई. सो इन आवर केस व्हाट वी वांट इज अपॉर्चुनिटी के क्लिक पे होना चाहिए and I want them to update the type and the lead source field. Both are pick list, right? Type I want and lead source I want. So in that case, now we will go through screen में कौन से elements आप modify कर सकते हो. One by one we will go through everything. The first step you have to do, जब भी आप screens add कर रहे हो, they need to have a name. So let's, for now I'll just write screen 1. Okay, ideally it should be a better name like
opportunity input screen, right, or field update screen. Similarly in that way, just आपने label दिया. One thing I want to tell you guys, because I was going through your changes I saw, जहाँ पे भी आप कुछ कस्टमाइजेशन बनाते हो, जब आप वर्क फ्लो बना रहे हो, प्रोसेस बिल्डर बना रहे हो, ऑलमोस्ट हर जगह आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड मिलेगा. यू शुड हैव अ हैबिट ऑफ एडिंग वैल्यूज इन दिस डिस्क्रिप्शन फील्ड. उससे क्या होगा, आपकी बनाई चीज अगर बाद में आपका टीम का कोई देखेगा, तो ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसका पर्पस क्या है. एंड जस्ट काइंड ऑफ अ जेनेरिक डिस्क्रिप्शन जो फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन करता हो थोड़ा, लाइक दिस वुड बी इनपुट स्क्रीन टू अपडेट lead source, and what is the other field we decided? Opportunity type. Opportunity type. Done. Now what will happen? कभी भी कोई इस फ्लो को अगर बाद में कोई दूसरा डेवलपर एडिट करता है या अपडेट करने की कोशिश करता है, he will go to the screen one. See, नाम तो हमने डाल दिया. He can go, he will see, okay, this is the purpose of this, right? Now within this we have few other elements also, as you can see. जब मैं hover कर रहा हूँ, so when I hover over this, you can see their basic details. This is the header, this is the footer. These are fixed. Now inside header, what are the things I can do? One is show header, जिसकी वजह से ये वाला ब्लॉक दिखेगा. I can choose not to show it, or if I want, I can choose to show it, right? Similarly, help text. Now if help text, just done, right? Now what happened? Sorry, I closed it. हेल्प टेक्स्ट हमने जो एनेबल किया, हेल्प टेक्स्ट आपका यूआई पे ऐसे दिखता है, एक आई की तरह. एंड इसका पर्पस क्या होता है? डू आई हैव एनी फील्ड हियर व्हिच हैज एनी हेल्प टेक्स्ट? I don't think there is. Let's go to the account. Can you see help text on any field? No. Not sure. Did we create help text on employee? Yes, we are Yes. creating Right. an employee. So you see this help text, you can see जहाँ पे जस्ट आप थोड़ा और डिटेल यूजर को दिखाना चाहते हो. Similarly, on the flow level also, you can do the same. You can add a help text on the header only. On the footer, it becomes a bit more, interesting. How? First is एक तो आप completely remove कर सकते हो. That is up to you. Right? If you show the footer, then you have to realize footer के अंदर by default आपके कुछ buttons रहते हैं. Right? Why these buttons are there? This is more to do with एक screen flow का intended use क्या है. The intended use for screen flow is आपको 2-3 स्क्रीन ऐसे प्रोसेस में दिखानी है. पहले कुछ एंटर होगा, फिर कुछ एंटर होगा, फिर कुछ और एंटर होगा, राइट? थिंक ऑफ इट जैसे हम फील्ड बनाते हैं. सबसे पहले आप फील्ड का टाइप सिलेक्ट करते हो, फिर फील्ड का डिटेल्स डालते हो, राइट? देन कौन से प्रोफाइल्स को दिखाना है, देन कौन से पेज लेआउट्स पे ऐड करना है. 4 स्टेप्स यू वांट. सो वन बाय वन क्या होता है, 4 स्क्रीन्स में आप जाते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट कर. सिमिलरली ऑन स्क्रीन फ्लो आल्सो प्लान्ड पर्पस वही है कि आप एक स्क्रीन दिखाना है. If you only show one screen, then what will happen? This button will show as finish, right? If there is another screen after that in your flow, then this will become next, which is why ये दोनों का combination एक ही में है कि next और finish button का जो command है. Within this, you can see इसको अगर आप हटा देते हो, from the UI next और finish का button हट जाएगा. Now when will you hide next or finish? Say अगर आप खाली कोई information दिखा रहे हो कि information देखो और फिर close पे click कर दो, then you can hide this. But in most cases you will be having this. Now अब इसके अंदर भी हमारे पास दो ऑप्शन है. एक है स्टैंडर्ड लेवल जहाँ पे नेक्स्ट और फिनिश का है, और यू कैन डू इज ऐड अ कस्टम लेवल.
कस्टम लेबल अगर आप डालते हो तो उससे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि बटन के अंदर क्या टेक्स्ट दिखेगा. लेट्स राइट मूव टू नेक्स्ट. राइट. So nothing, just you could modify कि बटन पे क्यों दिखेगा. This is more for ease of use, ताकि बटन देख के भी यूजर को पता चल जाए ओके ये करने पे नेक्स्ट स्टेज पे मूव हो जाएगा. राइट. अब सिमिलरली इफ देयर आर से मल्टीपल स्क्रीन, तो देन अगर आप नेक्स्ट जा सकते हो तो प्रीवियस आने का भी फंक्शनलिटी होना चाहिए. सो फॉर दैट यू हैव द प्रीवियस बटन. नाउ इफ यू आर डूइंग अ प्रोसेस जिसमें यू डोंट वांट पीपल कि वो रिवर्स आ सके, राइट, देयर आर सिचुएशंस जहां पे आप चाहोगे कि रिवर्स ना आए लोग. So in that case, you can just hide the previous button. And pause button, let's keep pause button for now. ये just है उस screen पे hold करने के लिए. So this is anyway, if needed it is fine, if not needed, वैसे भी mostly आप अगर button click पे ही next जाएगा तो anyway without pause also it will be stuck there. Now pause confirmation का मतलब क्या होता है, अगर आप pause पे click करते हो तो एक notification दिखाता है कि this flow has been paused, right? So we will just test this, all of these. So let's do one thing. अभी के लिए इस फ्लो के अंदर आई जस्ट वांट टू ऐड अ टेक्स्ट. ओके, सो all the things I can add from this, I can add here from the components. This fields we will go later, but let's go with components. And I want a display text. So simply like page layouts, you can drag and drop things here. Okay, so I have dragged the display text. Now you have to realize जब भी आप कोई भी element drag करते हो, see हर element के अंदर there is उसका इंटरनल प्रॉपर्टीज है जहां पे आपको सेट करना पड़ेगा. अनलेस आप सेट नहीं करते हो वैल्यूज एक्चुअली यूआई पे दिखेगा नहीं. द मोस्ट सिंपलेस्ट वन इज डिस्प्ले टेक्स्ट. डिस्प्ले टेक्स्ट के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप कोई फिक्स्ड टेक्स्ट का वैल्यू आप प्रिंट अगर करना चाहते हो तो देन यू कैन डिस्प्ले दैट. जैसे हमने स्क्रीन का नाम दिया था, आपको हर एलिमेंट का नाम देना पड़ेगा, राइट. Sorry, this is an API name. What does that mean? It cannot have spaces. But within a flow, हर एलिमेंट का आपको नाम देना पड़ेगा API name, and you have to make sure they are unique, right? So dummy text हमने दिया, and inside this I'll write right. That's it, done. Okay, these one you see यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि इनके लिए अभी हमने API name नहीं दिया है. This we can remove for now. The rate, let's delete this also, and let me just run this one. Okay, as with all the other things, what you have to do first, you have to save this. Right, and inside this जब आप सेव कर रहे हो, name, API name is the basic, but always go into advanced. Why you need to go into advanced? There are a few things जो आपको पता होना चाहिए. Type is screen flow, which we have already set anyway. One thing is this, which is the interview label. What does this mean? कल मैंने आपको जो debug logs दिखाए थे, right? तो as you had seen there कि workflow rule चलने पे भी debug log हुआ था, right? Similarly flow जब start हुआ था तब भी debug log हुआ था. So within that debug log, वो specific flow जब run हुआ है उसको कहते हैं flow interview, और उसका नाम मिलेगा आपको ऐसे, टेस्ट स्क्रीन फ्लो, जो भी नाम है आपने दिया, टेक्स्ट स्क्रीन फ्लो, एंड उसके साथ इस फ्लो में जो भी डेट एंड टाइम है वो ऐड हो जाएगा. नाउ the other most important one is this, how to run the flow, right? How to run the flow के अंदर default will be, if you don't click on anything, it would be user or system context. What does that mean? यूजर और सिस्टम कंटेक्स्ट का मतलब है अगर सपोज एपिक्स से कॉल हुआ,
So within Apex, when this is getting called, it comes with all access. Okay, system के context में चलता है, not with specific user. अगर specific user के context में चलता है, then you come up with profiles में permission है कि नहीं, permission set में है कि नहीं, right? ये सब चीजें आ जाती हैं. But if it comes with a system context, then those things don't come into the picture. Now this one is the default. अगर यूजर ने खुद मैनुअली क्लिक करके चलाया है तो खाली यूजर के परमिशन के अकॉर्डिंग चलेगा. अगर यूजर को पता चला इस अपॉर्चुनिटी के फील्ड्स में एक्सेस नहीं है प्रोफाइल पे तो एरर आ जाएगा, राइट. The other options are the system context with sharing and system context without sharing. So this is more regarding access on the record level. So with the sharing part, when we had covered, right, I gave you a basic of how it works. So this is the same thing. With sharing करेंगे तो record level access है कि नहीं वो देख के चलेगा. Without sharing करना मतलब is equivalent to giving it that read all data permission. तो उसको पूरा डाटा दिख जाएगा. So this flow will never fail, just because of the data, right? But let's leave it blank for now. We want it to run in default context. Flow हमारा सेव हो गया. Now let's run this flow. So see, यहाँ पे मेरा है टेस्ट स्क्रीन फ्लो. दिस इज अ डमी टेक्स्ट फिनिश, बिकॉज खाली एक ही स्क्रीन है, फिनिश पे है. एज सून एज आई क्लिक ऑन फिनिश, द एग्जीक्यूशन खत्म हो गया और फिर नया एक विंडो फिर से खुल गया. सो दिस इज जस्ट द डीबग इज रनिंग कंप्लीटली फॉर दिस. तो अभी तक जो हमने फंक्शनैलिटी किया है, फॉर दैट इट इज फाइन. लेट्स एक्टिवेट दिस फॉर नाउ. अब हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी का जो पेज लेआउट है, राइट, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट पे हमको जाना है, बिकॉज वी वांट दिस टू रन ऑन द अपॉर्चुनिटी पेज, राइट. सो लेट्स गो टू opportunity.